Students, class 12 physics, chapter electric charge and field. First chapter, class 12. Now you will study properties of electric charge. Charge you have read. Charge is the physical quantity which can transfer from one body to another body. Charge can flow from one body to another body. Charge can flow from higher potential to lower potential. Charge is physical quantity. SI unit of charge is coulomb. So now you will study properties of electric charge. There are four properties: additivity of electric charge, quantization of electric charge, and conservation of electric charge, and invariance of electric charge. In NCERT given three properties. One more property you can study: invariance of electric charge. One by one you can study and try to understand. You are seeing additivity of electric charge. What is additivity of electric charge? एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज ऑन ए बॉडी. अगर कोई बॉडी है, इस पर चार्ज दे रहा हो, यू कैन गिव चार्ज मोर एंड मोर. तो टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड सो ऑन. अगर इस बॉडी है, कोई बॉडी है, सपोज करो चार्ज दिया 5 कूलम और चार्ज दिया 2 कूलम और -1 कूलम चार्ज दिया, तो कितना हो गया? 5 प्लस 2 7 और -1, तो टोटल चार्ज कितना हो गया? 5 प्लस 2 7 7 और -1 कूलम यानी 6 कूलम. तो क्या हो गया? एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिशन ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी. प्लस 5 प्लस 2 7 और -1 कूलम, तो टोटल चार्ज कितना हो गया? 6 कूलम. अब दूसरा क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज ऑन ए बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE. And this is number. Number means integer, not fraction. N is not fraction. Half, 2 by 3, 5 by 6, not. Only N is number. Okay. Integer. E charge on electron. तो क्या हो गया? What is quantization of charge? Charge on a body is integral multiple of basic charge on an electron. E the charge on electron. तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन E क्या हो जाएगा? -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम. और N क्या हो गया? N इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन. यू कैन से जब ये दो बॉडी को रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी. हाफ इलेक्ट्रॉन कहीं मूव नहीं करेगा. 60 इलेक्ट्रॉन, 70 इलेक्ट्रॉन, 80 इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव करेगा. हाफ इलेक्ट्रॉन विल नॉट transfer from one body to another body. So what is quantization of charge? Quantization of charge is the electric charge on a body. Charge on a body integral multiple of basic charge on an electron. Quantization of charge. Now conservation of charge. Third, conservation. You have read law of conservation of energy. Law of conservation of energy you have read. So energy cannot be destroyed. Total energy is conserved. And energy neither can be created nor destroyed. Total energy is conserved. In the same way, conservation of electric charge. Total charge is conserved, constant. Only charge will transfer from one body to another body. The net charge will be conserved. In nuclear reaction also you can apply law of conservation of charge. The total charge will be conserved. Charge neither can be created nor to be destroyed. Now here invariance, fourth property, invariance of electric charge. Invariance, variation, you know, vary, change. Invariance, change.
invariance, no change. So invariance of charge, then at rest is equal to motion. Charge at rest is equal to charge in motion. कोई मास है, कोई बॉडी, ये बॉडी इज मूविंग विथ लार्ज वेलोसिटी, मास विल इंक्रीज अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन. अगर कोई बॉडी बहुत फास्ट वेलोसिटी से मूव करेगा नियरली टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, देन मास विल इंक्रीज. बट इन द केस ऑफ चार्ज, if charge is moving, charge is at rest or charge is moving, so there will be no change in the charge. So charge at rest is equal to charge in motion. So there are four properties of electric charge: additivity of electric charge, quantization of charge, third property this conservation of electric charge, and fourth invariance of electric charge. These